Any questions regarding these structures? सर वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में आपने एस और यस का इजाफा किया है, ये हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? Good question. Let us pay attention to the subject. Whenever our subject is a singular person or a third person, like he, she, it, or a singular noun, then we add the s or es to the main or present form of verb. Look at this structure. If our subject is I, we, you, they, or a plural noun, we will denote plural noun as pn. Then we use the helping verb. Then we use the verb as present. And the helping verbs do. But if our subject is a third person pronoun like he, she, it, or a singular noun, then we add an s or es to the main form or present form of verb. And the helping verb here we use does. Now another question arises, with certain verbs we add just s, but with other verbs we add es to the present or infinitive form of verb. Look at this table. All those verbs that end at h, o, s, or x, we add es to that verb. We add an es to those verbs that end at h, o, s, or x, and only s to all the rest of the verbs if our subject is a third person pronoun. Just look at these examples. He watched the movie. Now, just because this verb ends at h, we have to add an es at the end. He watches the movie. Similarly, she go to the school. Now this verb also ends at o, that is why we have to add an es after the present form of verb. She goes to the school. This verb also ends at s. That is why we have to add an es at the end. He guesses about the paper. वो पेपर के बारे में अंदाजा लगाता है. He fix. This verb also ends at x. That is why we are bound to add an es at the end. He fixes the car. वो कार की मुरम्मत करता है. The point. Yes. हम उन तमाम वर्ब्स में es का इजाफा करते हैं जो वर्ब्स h पे ख़त्म हो रहे हों या o पे या s पे या x पे, और बाकी जितने भी वर्ब्स हैं उनके आगे हम सिर्फ s का इजाफा करते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, मीन्स ही, शी, इट हो या अली हो, कोई भी हो. अब इन मिसालों को देखिए, जैसा कि he watched the movie. अब इस watch का जो लास्ट वर्ब है, लेटर है, वो है h. ये वर्ब एंड हो रहा है h पे. दैट इज वाई, यही वजह है कि हम इसमें es का इजाफा करने पे मजबूर हैं. he watched the movie, वो मूवी देखता है या फिल्म देखता है. she go, अब ये वर्ब जो है o पे एंड हो रहा है और सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो हम मजबूरन इसमें es का इजाफा करेंगे. she goes to the school. सिमिलरली ये वर्ब जो है गेस, ये s पे एंड हो रहा है, तो जब हम इसे फिक्रे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे तो हम कहेंगे कि ही गेसेस अबाउट द पेपर, और ही गेसेस अबाउट द, ही प्रिडिक्ट्स अबाउट द वेदर वगैरह. इसी तरह ही फिक्स, अब ये फिक्स का वर्ब जो है ये x पे एंड हो रहा है,
तो हमारी मजबूरी है, हम इसे ईएस का इजाफा इसमें करेंगे। ही फिक्सेस द कार, वो कार की मुरम्मत करता है। अब समझ आई बेटा आप लोगों को? यस सर।